I also wanted to take one more class called as the response entity class. Okay, ये एक बनी बनाई क्लास है जिससे आप रिस्पॉन्स भेज सकते हो. तो नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, जब हम गेट एपीआई कॉल करते हैं तो अभी ये एपीआई क्या कर रहा है, स्टूडेंट का नाम ले रहा है और स्टूडेंट का रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है. तो अगर मैं एलिस पास करता हूँ, इट विल रिटर्न मी रिकॉर्ड ऑफ एलिस, और अगर मैं बेन पास करता हूँ, इट विल रिटर्न मी रिकॉर्ड ऑफ बेन. करेक्ट. So instead of returning the object as a return as a return type of the function, instead of keeping the object, okay, we can keep it as a response entity. So what we can do is I will say that I'm returning the object of response entity, and the response entity will return you what type of object that you can generalize over here, that it will return me a object of type student, and that object which is being returned is this object which is coming from stored service. Okay, so then you can say return as returning object, right? So new student service और as a bracket इसको पास कर देंगे. ओके, इसमें एडवांटेज क्या मिलता है आपको कि आप जो है वो स्टेटस कोड भेज सकते हो साथ में, कि जो भी आपको स्टेटस कोड भेजना है तो HTTP. ओके, ये क्लास है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप उसको जो भी आपको स्टेटस कोड भेजना है ओके वो भी आप भेज सकते हैं. तो ऐसे अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो, तो दिस इज हाउ यू विल यूज द रिस्पॉन्स एंटिटी क्लास. So I didn't do anything new, just converted this into a response entity. And the advantage response entity gives is to the front end we can pass the HTTP status of this endpoint. So when I hit this endpoint, what response I got? I got a response okay. Okay means 200. Okay. So if you are trying to delete a record and that record is not existing, so you can pass the appropriate HTTP status. Like this, you just have to put whatever you are returning in the in the response entity. That's all. So if let's say you want to, let's say if you have entity by get all students, if let's go to that which has get all. This is department name. This is okay. Get all department. Now what is this returning? This, right? So if I want to use the response entity over here, what I will do is response entity and will return you list of department. Okay, and then over here just copy this, make object of that, and in this pass your whatever you wish to return. Okay, then comma, you can pass the HTTP status also along with it. Okay. Dot whatever status you want, okay, which you want to send to the front end. So let's say if I put over here okay. So there's no changing in the code. It's just that we are returning the response in the form of a HTTP response, and in that advantage what we get is we can pass the HTTP status. Okay, so whenever the software architect, whenever he will make the endpoints, he will always tell this endpoint what should it return on different statuses. So if the status is 200, what should this endpoint return? If the status is 400, what should this endpoint return? If the status is 500, what this endpoint should return? So in that catalog, each API is mentioned along with the response status. So that API should return its status also. So this is the advantage we get when we use response entity, that we can pass the response status to it. The code remains same. Code doesn't change. तो स्टेटस कोड्स कौन से फेमस? तो सबसे है स्टेटस कोड जो है सबसे ज़्यादा, अगर आपका सक्सेस हो जाता है सब कोई भी
यानी सक्सेस आपका हो जाता है तो उसके लिए आता है 200। क्या आता है? यानी जो आपको चाहिए था वो मिला। ओके, तो इसको बोलते हैं ओके। क्या बोलते हैं? मीन्स एवरीथिंग वेंट गोज एज पर प्लान। तो जो मुझे रिस्पॉन्स चाहिए था, मुझे वो रिस्पॉन्स मिला, तो स्टेटस क्या है वो? 200। फिर एक फिर एक होता है 201। अगर मैं कुछ पोस्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? अगर मैं कुछ पोस्ट कर रहा हूँ और वो रिकॉर्ड जाके पोस्ट सक्सेसफुल हो जाता है, यानी इट इज क्रिएटेड, दैट रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, देन वी यूज 201। तो ये अक्सर पोस्ट में आता है। फिर है 202। अगर मैं कुछ चीजें अपडेट कर रहा हूँ, यानी पुट कर रहा हूँ, और वो जाके पुट हो जाती है, यानी एक्सेप्ट हो जाती है, मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है, तो आता है स्टेटस 202। ठीक है। फिर 400 के भी वेरिएशन है। 400 क्या है? आपका जो रिक्वेस्ट बॉडी है ना, रिक्वेस्ट बॉडी वो इनकरेक्ट था, रिक्वेस्ट बॉडी वाज इनकरेक्ट, यानी आपका जो रिक्वेस्ट में जेसॉन गया है ना, रिक्वेस्ट बॉडी में जेसॉन, वो जेसॉन को इंटरप्रेट नहीं कर पाया आपका, तो ये आता है 400, यानी बैड रिक्वेस्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं इसको? यानी आपका रिक्वेस्ट हेडर, आपको जब आपको 400 आए तो आपको पहला जाके आपका रिक्वेस्ट बॉडी चेक करना है। तो अगर उसने इंटरव्यू में पूछ लिया व्हाट वुड बी द ट्रबल शूटिंग स्टेप्स आई विल टेक व्हेन आई गेट रिस्पॉन्स एज 400, so you will say it is because of a bad request. First thing first, I will go and check my request body for the JSON. फिर 500 भी है। फिर 404 है। 404 क्या है? बहुत फेमस है ना, पेज नॉट फाउंड, तो इसको बोलते हैं नॉट फाउंड वाला एरर। फिर 500 भी आता है। ठीक है, वो इंटरनल सर्वर एरर है। क्या बोलते हैं उसको? कि आपका जो सर्वर जो है इसको रिक्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाया, सर्वर फेल्ड टू कंप्लीट द रिक्वेस्ट। ओके। फिर 403 है। अगर आपको वो एपीआई एक्सेस करने का परमिशन नहीं है, अगर आपको परमिशन नहीं है आपके पास, तो 403 आता है, उसको बोलते हैं फॉरबिडन। क्या बोलते हैं? मीन्स यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस द एपीआई। तो इसमें हमारे पास आगे रोल्स एंड परमिशंस भी आएंगे। यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस द एपीआई, ये है 403, इसको बोलते हैं फॉरबिडन। ठीक है। 500 आ गया इंटरनल सर्वर एरर। ओके, अगर आपका सर्वर बंद है, सर्वर अगर आपका बंद है तो उसको बोलते हैं 503, सर्विस अनअवेलेबल। क्या है? तो ये आपका सर्वर बंद है ऐसा। और रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गई, आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट हो चुका है, तो 504, यानी वो सर्वर ने टाइम एक्सपायर हो गया, रिक्वेस्ट टाइम आउट। So like this you should be comfortable with these status codes. So very important in the interview, they might ask you all.